Konnichiwa. Welcome back to my channel Japan Talks. My name is Isha and I'm your host for the day. आज मैं बनाने वाली हूँ वीडियो हिंदी पे, क्योंकि मेरे मैक्सिमम दोस्त जो है वो इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं अभी के लिए. ज्यादा व्यूअर्स तो है नहीं, तो इसीलिए उनके खैरियत के लिए मैं वीडियो जो है वो हिंदी में ही बनाऊंगी. आज का वीडियो कुछ स्पेशल है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जापान टॉक्स, जिसपे हम लोग जापान के कल्चर के बारे पे, उनके डिफरेंट जगहों के बारे पे, साथ ही साथ उनके खाने के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले थे. तो मैं आपको बता दूं कि जापान जो है, जापान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है किटकैट. यस, किटकैट. हमारे इंडिया पे खाली 2 फ्लेवर्स है. एक नया आया है डार्क चॉकलेट और एक पुराना वाला जो है नॉर्मल जो चॉकलेट. तो बचपन से हम लोग खाते आए हैं किटकैट को. बताऊंगी कि जापान में 300 से भी अधिक फ्लेवर्स मिलते हैं. फ्लेवर्स मिलते हैं किटकैट के. उनमें से कुछ ऐसे भी फ्लेवर्स हैं जो कि खाली सीजनल है, यानी साथ ही साथ सारे मीठे फ्लेवर्स नहीं है. तो आपको वेरिएशंस पता चलेगा. तो मैं गई थी स्टोर पे, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए ये बात. तो मैं लेके आ गई. मेरे पास अभी 300 में से खाली 7 ही है. आपको उठा के दिखा देती हूं. थे मेरे घर के नीचे, मैं क्विकली उनको लेके आ गई थी और सोचा कि वीडियो ही क्यों ना बना दूं. तो आज हम बात करेंगे इन फ्लेवर्स के मैं नाम बता दूं. ये जो है हमारा पॉपुलर वाला ब्रांड है. ये सारे बड़े बड़े पैकेट्स इनके अंदर, मतलब इसके भीतर छोटे छोटे पैकेट्स है. एक अभी जो शायद से 10 रुपए वाला जो किटकैट आता होगा इंडिया पे, तो वैसे ही पैकेट्स काफी सारे हैं. इस पे जैसे लिखा हुआ है 14, यानी 14 पैकेट्स इनसाइड दिस बिग पैकेट. तो ये गया नॉर्मल वाला फ्लेवर जो इंडिया में मिलती है. ये दूसरा, ये है आपका कुछ वो डाइजेस्टिव बिस्किट. यस, डाइजेस्टिव बिस्किट. ये है मेरा फेवरेट, ये है माचा. आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को लगता होगा कि माचा का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लोगों के दिमाग में है कि बहुत कड़वा होता है. हाँ, थोड़ा बहुत कड़वा है, बट ये मस्त टेस्ट में है, इसीलिए ये मेरे लिए बेस्ट है. ये उजी माचा है. माचा का भी काफी माचा के भी काफी सारे कैटेगरीज है. तो ये खाली एक फ्लेवर है. माचा के कई सारे फ्लेवर्स के किटकैट मिलते हैं. उसके बारे पे जब मैं इन डिटेल्स समझ में आएगा तब मैं बता दूंगी. ये वाली जो है ये चीज केक वाली फ्लेवर है. जी हाँ, चीज केक. और ये देखो, ये गया चॉकलेट ऑरेंज. और ये छठा वाला स्ट्रॉबेरी. और ये 7वां व्हाइट चॉकलेट्स. इन सारे फ्लेवर्स के नाम और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा. तो आज हम लोग टेस्ट करेंगे 1 by 1. ऑफकोर्स ये पूरा तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती, बस एक बाइट करके लूंगी. मैं जल्दी से अपने लिए एक पानी का बॉटल ले लेती हूँ ताकि फ्लेवर्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए. तो शुरू करते हैं फिर. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Made the brag, the gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Made the brag, the gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Made the brag, the gas in the back of the set, never leave, she's so bad. Made the brag, स्ट्रॉबेरी का इतना ज्यादा उभर रहा है स्मेल कि इसको सूंघने से ही पता चल रहा है कि इसका एक टैंगी सा फ्लेवर आ रहा है स्ट्रॉबेरी से। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.
कौन सा था, भूल गई फिर से। ये था आपका डाइजेस्टिव बिस्किट। इन तीनों का फ्लेवर सिमिलर ही है, बस व्हाइट चॉकलेट में थोड़ा व्हाइट चॉकलेट का जो स्मेल है वो ज्यादा आ रहा है। यानी अमूल दूध अगर आपने खाया होगा तो दूध का स्मेल थोड़ा ज्यादा आ रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। और ये वाली अपनी पुरानी वाली बेचारी छोटी सी हमेशा से बचपन से खाते आए हैं, तो ऑब्वियसली इनमें इस पे कोई स्पेशल कुछ रहा नहीं अभी के लिए इस एक्सपेरिमेंट पे। तो एक्सपेरिमेंट वाइज मुझे ये तीनों बहुत अच्छे लगे। आप भी कभी आओगे जापान तो जरूर ट्राई करना, और अगर हो सके तो यहाँ से भी मंगवा सकते हो डेफिनेटली। जापान से अगर इंपोर्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई करना। मैं कोशिश करूंगी और किटकैट वेरिएशंस आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, अगर पसंद आया हो तो जरूर से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक बटन दबा देना, और साथ ही साथ अपना कमेंट छोड़ना। इसी के साथ एंड करती हूँ मैं वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।